Hello everyone, and today we are going to learn about functions. In this session we learn about user-defined functions, flow of execution in a function call, formal parameters and actual parameters, and different types of parameters in the user-defined function means the functions which are being defined by the user as per their need. तो ऐसे functions को define करने के लिए हमें क्या करना होगा? So what will be the way? First of all, we'll write down the def. What is this def? Def is a keyword. What is this cal? Cal is the name of that function. X is a parameter on which this cal will work. Fine. Docstring is an explanatory string which will tells you something about the functionality of this function. ये function क्या कर रहा है उसे हम कहाँ describe कर सकते हैं इस docstring में. This docstring is always enclosed between triple single quotes or triple double quotes. Then we'll be having a body of a function, means the actual functionality of that function, and the last statement will be the return statement through which we are returning something from the cal to the calling function, and this whole thing is called as function definition. Now this function definition does not execute the function body. This gets executed only when the function is called or invoked. So in the following line we are calling this function. Now the very first statement of the function definition, this def cal x, इसे क्या कहा जाता है? function header. Parameters मतलब ये जो bracket में हमने लिखा हुआ है that will be called as parameter. Function body which will be indented statement below the function header is called as a function body, and this is a docstring. इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को समझने के लिए let's take one example. So first of all, suppose that I want to create one function for calculating the area of rectangle. So I'm writing here, I'm opening one new file, and then def is a keyword to define a function. I'm giving a name of that function as an area. Then for calculating the area of rectangle I need two arguments or two parameters. One is the length of that rectangle and one is breadth of that rectangle. Then I can write down the docstring as area of rectangle. Now this is optional, you can skip it also. This is only to tell the functionality of that function. Then to calculate area I'm giving you the A is equals to length into breadth. And then I am returning the area. Right. Then after that automatically your cursor will come over here. Now this is the function definition is over. After that I'll write down the top level statements through which I can call the statements. Right. So for calling the statements I need the length and breadth. Either I can call it as an area, and I can pass 5,4 this way. So again this 5 when I am calling this function it is returning me some value, so I am collecting that value into res, that is the result. I am printing that result as res this way. Now let's run this program. Fine. Again I am explaining you that the calling of this function, I am calling this function area, I am passing two values. What happens? 5 will be the value of length, 4 will be the value of breadth. It will calculate the area, it will return the area. When it returns the area I will collect it into the res, and then I am printing the value. Now let's run it. So the area is 20. In the similar way, instead of giving the direct values for this length and breadth, I can ask the values of these variables from the user this way. Input, enter length, and similarly breadth also.
and another variable, let's take b. Now instead of passing this constant value, I'll pass it as an L comma b. Fine. So what will happen that when the program will run, first of all it will ask you for the length, then it will ask you to input your breadth. Whatever value you are passing, it will pass this L value get copied into length, b value get copied into breadth. Function will calculate the area, it will return the area. Again we are collecting the area into res and we are printing the result. Now let's run it. Right, so it is giving us 8, giving breadth as 9 and area is 72. So in this way we can calculate, we can define any function in the Python. Now the structure of the Python program. In the Python program, generally all the function definitions are given at the top, followed by the statements which are not the part of that function. Fine, ये जो statements है which are not the part of any function, they are called as top level statements. यहीं से execution शुरू होगा and here we'll make the function calls also. Right? Now the flow of execution. Flow of execution का मतलब जब हम function को call करेंगे, then in what order the statements will get executed is known as a flow of execution. Fine. Here the one example is giving with the help of def. I am defining a function as func, fine, and this is the body of the function, and then we are returning something. These are the top level statements. What will happen? That the execution will start with the top level statement. We are making a function call with the help of func. As soon as the function is called, what will happen? The control flow to the function definition. Fine. Then the whatever statements are being written over here in the body of a function, they will get executed one by one. As soon as the return will be encountered, again it will send back the control back to the function, back to the statement from where the function was called. Fine. And whatever the statement it is following from the following the function call, वो सारे statements execute होना शुरू हो जाएंगे. In this way the flow of execution is carried out during the function call. Now let's take one example for the flow of execution. Here I have taken one example where I have defined one sum function with the help of def keyword. This is the function body. Then these are the top level statements which is starting from statement number 5. Right. Now execution will always start from the first statement of program. So what happened that the comment जो आपने लिख के रखा है सबसे ऊपर, so comment will be ignored by the Python. It is not executed at all. If the Python notices any function definition, then the Python just execute the function header line to determine that it is a proper function header, and it skip all the lines of the function body. मतलब ये सब कुछ execute नहीं होगा, ये सिर्फ def function जो है वो execute होगा. उसके बाद में हम top level statements पे आ जाएंगे. Top level statements में पहले statement number 5 execute होगा, then 6 execute होगा. As soon as the 7 is executed, we are making a function call, fine, with the help of sum number 1 number 2. तो यहाँ से हम skip कर जाएंगे 2 पर. फिर 2 के बाद इसकी जो भी फंक्शन बॉडी है 2, 3, 4 वो 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आएगा, रिटर्न स्टेटमेंट से हम फिर से कहाँ आ जाएंगे, फिर से फंक्शन कॉल पे आ जाएंगे. और फंक्शन कॉल को जो फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट्स, मतलब 4 से हम वापस से आ जाएंगे स्टेटमेंट नंबर 7 पे, एंड देन आफ्टर दैट स्टेटमेंट नंबर 8. आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स. आर्ग्यूमेंट्स मतलब वो वैल्यूज़ जो कि फंक्शन कॉल में आती है, फंक्शन विच अपीयर्स इन द फंक्शन कॉल. पैरामीटर्स आर द वैल्यूज़ विच अपीयर इन फंक्शन हेडर. So in this example we'll say that a and b are the arguments, और इसे हम formal arguments भी कहते हैं. और when I'm making a function call, when I'm passing some number 1 and number 2, this number 1 number 2 are called as parameters, right? And this is also called as actual parameters.
Now there are the types of parameters. Function supports 4 types of formal parameters: positional arguments, default arguments, keyword arguments, and variable arguments. Actually, in Python, the parameters and arguments are synonyms. They can be used uh, as a synonyms. Positional arguments. In this type of arguments, when you create a function call statement for a given function definition, you need to match the number of arguments with the number of parameters required. It means that suppose if we are defining a function check, we are having a 3 parameters a, b, c, fine, and these are the different function calls for the check. Check we are passing this is the function call when we are calling the check with the x, y and z. So what will happen, the number of parameters x, y, z जितने की ज़रूरत है उतने ही हमने पास किए हो, और जो ऑर्डर है वो भी ऑर्डर हमें इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से मैच करना चाहिए. ठीक है, फंक्शन कॉल में जो आपने ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स रखा है वो फंक्शन डेफिनेशन के ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स से मैच करना चाहिए. सो व्हेन यू कॉल अ फंक्शन check with the x, y, z value, then what will happen, the x will be copied into a, y will be copied into b, and z will be copied into c. In the second call, check 2, x, y, the 2 will get copied into a, x will get copied into b, and y will get copied into c. And in the third call, when I am passing 2, 5, 7, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी 7. Now the default arguments. A parameter having a default value in a function header is known as default parameter. Python allows us to assign a default value to the function parameters, which is useful in a case a matching argument is not passed in function call statement. मतलब हम function call statement में किसी particular value parameter की value pass ना करें, उस केस में वो उसकी default value को consider कर ले. जब हम इस तरह का कोई हमारा सिनेरियो बन रहा है तो उस केस में हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को कहाँ स्पेसिफाई किया जाता है, फंक्शन हेडर में स्पेसिफाई किया जाता है. ये इंपॉर्टेंट है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम कहाँ डिफाइन करेंगे, इन द फंक्शन हेडर. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल. आई एम डिफाइनिंग वन फंक्शन इंटरेस्ट. फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट आई नीड प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट. I know that always the rate of interest is 10%. So I don't want any value for this rate. So I'm defining the default value of this rate as 0.10. Fine. So what happened when I make a function call to this interest? So I'll pass 5400, 2. So the 5400 will be the value of this principal, 2 will be the value of this time, and rate will automatically gets the value as 0.10. Fine. And suppose if I am calling the interest with the 3 values, so in this case 6100 will be the value of principal, 3 will be the value of time, and this time we are passing the value of rate. So this 0.15, अब ये वैल्यू जो है वो रेट की वैल्यू हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 0.10. फाइन. तो अगर आप वैल्यू पास करेंगे तो वो ओवरराइड कर जाएगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, और अगर आप पास नहीं करते तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कंसिडर कर लेगा. एक चीज़ जो यहाँ ध्यान देने लायक है कि जब हम फंक्शन हेडर जब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देते हैं, सो हमें क्या करना है, in the function header any parameter cannot have a default value unless all the parameters appearing on its right have their default values. तो इसका मतलब कि अगर हमने जहाँ से देना शुरू किया है, किसी पैरामीटर को हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना शुरू किया है, तो उससे आगे वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना ज़रूरी है. फाइन. जैसे ये फर्स्ट सिनेरियो जो है, जब हम इंटरेस्ट में पी, टी और आर में हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि आर के आगे और कोई पैरामीटर है ही नहीं. पर सेकंड वाले केस में जब हम टी को कोई टी इज़ हैविंग अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज 2, तो जब हम इसे देना शुरू कर रहे हैं तो इसके आगे आने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना ज़रूरी है.
right? So R is not having a default value, so this is an incorrect way. It will give you an error. So this thing you have to keep in mind, right? Now the keyword arguments. अभी हमने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में देखा दैट इट विल गिव यू अ फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर पैरामीटर को स्किप कर सके फंक्शन कॉल में, ठीक है. बट स्टिल अभी भी हम फंक्शन कॉल में अभी भी हम वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन कॉल. यू हैव टू रिमेंबर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. और इसी चीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए हम यूज़ करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को, जिसे हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं. Fine. So Python offers a way of writing the function calls where you can write any argument in any order. किसी भी आर्ग्यूमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसका नाम स्पेसिफाई करें. जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आप फंक्शन को कॉल करते टाइम आप ये स्पेसिफाई करें कि आप फंक्शन और पैरामीटर के नाम को भी स्पेसिफाई करें. सो दिस इज कॉल्ड एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. In the same the previous example, for the interest function, for calling this function I am writing as p equal to 2000 time equal to 2 r equal to 0.10. So similarly प्रिंसिपल का वैल्यू ये हो जाएगा, टाइम का वैल्यू हो जाएगा, आर का वैल्यू ये हो जाएगा. इंटरेस्ट में अगर इनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, नाउ वी आर टेकिंग t इक्वल टू 4, देन p इक्वल टू 2600 एंड देन r इक्वल टू 0.09. सो p गेट्स वैल्यू 2600 क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया है दैट द p इक्वल टू 2600. वी आर गिविंग अ वैल्यू अलोंग विद द नेम ऑफ दैट पैरामीटर. So you can change the order. In the third example also, we have changed the order. So if you want to change the order of the argument, you have to use the name of that parameter along with the value. Fine. And this is a facility which is given by the keyword argument. इसी को कहा जाता है keyword argument. Variable arguments. A very different concept of the Python is variable argument. Variable argument, one thing to notice that we for this variable argument we have to mention the argument as star. Every time we'll prefix it with the star args. The name of this args can be different. You can name it by your choice. Fine. So let's take an example. Let's understand this thing with the help of an example. I have defined one function multiply. This is having a variable length argument star args. Fine. So this args is a variable argument. How can we determine? Because it is preceding with the star sign. That's why it is a variable argument. Now this y is having value 1 and we are writing a for loop as for num in args. So the args is a sequence. ARGS is sequence. So whatever numbers are there in ARGS, ये एक नंबर को लेता जाएगा और y में इसको मल्टीप्लाई करता जाएगा. और लास्ट वन वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ y. सो दिस इज द टॉप लेवल स्टेटमेंट वेयर वी आर कॉलिंग मल्टीप्लाई. फर्स्ट टाइम वी आर पासिंग 3,7. सो 3,7 ARGS क्या हो जाएगा? इट इज़ अ कलेक्शन और वी कैन से द सीक्वेंस विद द वैल्यूज 3,7. सो जब आप लिखेंगे फॉर नम इन ARGS तो पहली बार नम की वैल्यू होगी 3. सो y विल बी हैविंग अ वैल्यू एज 1 into 3 दैट इज 3. नेक्स्ट टाइम व्हेन द 7, so number will be having a value 7 and this time we'll be having 3 into 7 equal to 21, though the first output will be 21. Next time we are calling multiply with 9 and 8. This time the ARGS is a sequence with the values 9 and 8. So इस बार जो वैल्यू जनरेट होगी वो कैसे होगी? पहले होगा 1 into 9 and then 9 into 8 it will get 72. Third time we are calling it as 3, 4, 7. So ARGS will be having a sequence of 3 values 3, 4, 7. So हमारे पास इन सब का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा दैट इज 84. एंड इन द सेम वे 5, 6, 10 and we'll get a multiplication of all these number as 2400. Now let's discuss one exercise which is based on all these types of arguments. Consider a function with the following header. A header has been given here
def keyword info is the name of that function, and we are having 3 arguments. One is object, one is spacing, and one is collapse. ऑब्जेक्ट जैसे ये देखने से समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, स्पेसिंग इज हैविंग अ डिफॉल्ट वैल्यू एज 10 एंड कोलैप्स इज हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू एज 1. नाउ फाइंड आउट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट and which is incorrect, and also state the reason behind it. There are some options A, B, C, D, E, F are given here. We have to just identify that which is correct and incorrect along with the reason. Now the very first one, you are calling info. This is a function call info, and we are passing obj. Obj is in one value. So what happened when we are calling info with obj? Obj get copied into object. हमने स्पेसिंग की वैल्यू नहीं दी है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 10 हो जाएगी, कोलैप्स की वैल्यू नहीं दी है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 हो जाएगी. सो दिस इज द करेक्ट वन. In the next one, we are calling info with the spacing equal to 20. Now, which is here the missing parameter is object. We are not passing any value for this object, right? Because object is a positional argument and it is a mandatory argument. So हमें इसकी value देना तो ज़रूरी है, और यहाँ पर ये missing है. That's why it is incorrect. The next one is we are calling info with the obj2, 12. Now here what happens? The obj2, this value get copied into the object, 12 get copied into the spacing, और फिर collapse की value नहीं है तो collapse की value वो default ले लेगा 1. So this one is correct. The next is info. We are passing obj, collapse equal to 0. Now this obj3, this is positional argument. Collapse equal to 0 is keyword argument, because we are giving the name of that argument along with the value. So this is a keyword argument. So what will happen? obj3 चला जाएगा object में. collapse की वैल्यू आपने दी है तो collapse की वैल्यू हो जाएगी 0, और spacing मेंशन नहीं किया तो spacing अपनी वैल्यू ले लेगा 10. So this one is correct. Now this time we are calling info with empty bracket. So what will happen? Again the mandatory argument, that is positional argument, is missing here. So that's why it is incorrect. And last one, collapse equal to 0, object 3. So ये भी incorrect है. क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, positional argument जो है वो पहले होना चाहिए था और फिर उसके बाद में आपको कीवर्ड आर्गुमेंट लिखना चाहिए था, right? Because it's a positional argument, so it should have the first place, because its order is 1 in the function header. So in function call also the positional argument should be the first. So that's why this is also incorrect.